जो मनाया मनाया दुख सुख का दाम लगो तुम नाम। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की बात उर्दू में इसको दुनिया दुनिया ये दो से बनी हुई है और दो के ऊपर चलती है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। In Urdu, the world is तो कहते हैं इस सृष्टि का निर्माता काल और माया है, दोनों ने मिलकर इस सृष्टि को बनाया है। दुख, लाभ, मान अपमान, जीवन मरण is based on every in duality, the male and female, joy and sorrow, insult and praise, life and death. Everything is in form of a duality. इसीलिए इसको उर्दू में दुनिया कह दिया है और हमारे हिंदुस्तान वाले इसे संसार कहते हैं, कहते हैं संशय का सार। In this it is called sansar. That is the place of doubt. So, that, oh mind, you leave this world of duality and work towards going to Almighty. क्योंकि हमें दोनों तरह के कर्म जो पिछले जन्म में किया है अभी प्रारब्ध बना है और ये हमारे पाप पुण्य का चक्र चलते रहता है और सुख दुख हमारे जिंदगी में आते रहते हैं। In this world, we do two types of deeds, the good deeds and the bad deeds. Because of our previous deeds that we have done, the good deeds and the bad deeds, based on that we have got this, which is a mix of those good bad deeds, and that is how we. और कोई मान मरी मिल जाता है, फिर चक्कर आगे आ गया तो इनको तकलीफ मुसीबत नुकसान हो जाता है। So when we have a wave of good deeds that we have to redeem, then we get status, we get money or wealth, and we get efforts to be redeemed. Then the same turns into losses, or we have to go through sorrow and इनाम को 84 में मिलता है। when 1.4 million life forms. अगर एक पुण्य ज्यादा पाप कम किया हुआ जीवी मानव शरीर में, अगर वो कुत्ते के शरीर में चला जाता है अपने आगे के शरीर कर्मानुसार, माने कि कुछ कर्मानुसार, तो उसको ज्यादा दुख कम होना है क्योंकि पुण्य ज्यादा उसका और पाप कम है। तो इसीलिए उसे कुत्ते लोग बंगलों में रहते हैं, कार में रहते हैं, बेड पे सोते हैं और अच्छी तरह से उनको घुमाने के लिए नौकर जाते हैं उनकी देखरेख के लिए। So these good and bad deeds, they also help. They also go with us in the 8.4 life form. If someone has done good, but because of his karmas, that dog will have the enjoyment of the soul's good deeds. Same dog will have attendants to look after him. So those are a result of his good deeds. और जो मानव शरीर में अपना बिगाड़ा है, पाप ज्यादा पुण्य कम किया है, अगर ऐसे आत्मा कर्मानुसार कुत्ते के शरीर में चली गई तो उसको दुख ज्यादा सुख कम होना।
ऐसे ही कुत्ते आज गलियों में घूम So, where the bad deeds are more than the good deeds, and if such a soul then goes in the life form of a dog, then those dogs we see खाना मिलता है, उनकी कोई देख रेख नहीं करता है। अगर किसी के दरवाजे पे जाते हैं, लोग डंडे मारते हैं, तो कहते हैं उनके ही कर्म है। so those dogs don't get good food to eat. They roam around hungry, and when they go to some कम किया हो, वो पेड़ के शरीर में चला गया तो पेड़ के शरीर में भी उसको सुख ज्यादा और दुख कम होना है। तो ऐसे पेड़ तालाब के किनारे पानी की जगह में अच्छे उपजाऊ जगह में पैदा होते हैं। So, if the good deeds are there, and if one goes in the life form of a tree, then that tree may be may be grown next to a pond. गया तो उसको पहाड़ों पे, क्योंकि उसको दुख ज्यादा सुख कम होना, पहाड़ पे ऊंचाई पे 4 महीने पानी मिलता, 8 महीने सूखते। So, if the bad deeds are more, then yes, that being has to suffer. So, when it is born in the form of a tree, it may grow on hill dry out for 8 months. तो So, they have to go through that suffering. इसीलिए ऋषियों ने इसे नारायणी, तो इसीलिए इस शरीर का इनाम हमें 84 में जाता है, तो यही उसको काम करता है। तो इसीलिए इसको भी अगर अच्छी तरह से, यही काल का कानून है। So, this body that is given to us as a human, this is the temple of God, which where one can rise from being a human being to God Almighty. And this is a very important life form. And this life form also determines the enjoyment or the suffering that one is going to. कहते हैं कि हे मन, ये सुख और दुख के धाम को छोड़ और सतना से रख। This work focus on God Almighty. You focus on जो सच्ची सुख शांति आपके अंदर है, वो नाम में है। because in this world there is no permanent joy. There is no, there is joy and sorrow in this world, which is not permanent. The only permanent joy that है नानक दुखिया सब संसार, दुखिया जो नाम आधार। जिन्होंने संसार को अपना जीवन आधार बनाया सब दुखी, और जिन्होंने नाम को अपना जीवन आधार बनाया वो सब सुखी। Nanak Sahib says that those who have taken the support of this world, they are unhappy, and those who have taken the support of, और हमेशा के लिए इस दुख से आपका छुटकारा मिल जाएगा। so therefore he says that take the support of that Naam which has come from God Almighty, and you will get yourself rid of this sorrow of this world. जो मन यह दुष्ट का दाम, लगो तुम चढ़े अब सतनाम। तन संग मेरा तीर छूटे यह ग्राम। तो वही कहते हैं कि ये जिस देश में, जिस में हम जिस देश में रहते हैं, इसका हमारा 4 दिन का संबंध है, और एक दिन रहने का गांव भी जाता है, और ये साथ लेके जो चल। Not only is this world uh, not permanent, but the body in which we are staying, that body also has to be left behind after a few days. So that body, काल और माया की इसका परिणाम हो। by creating this ignorance of the soul, the both Kaya, they have so badly entangled this world that there is no future, and there is no salvation from this entanglement. कहते हैं पेट के खातिर, कुटुंब परिवार पालन पोषण के खातिर इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता है,
पापों कितने पाप करने को भी ये नहीं सोचता है कि इसका हिसाब हमें कितने जन्मों में देना पड़ेगा। For protection of and for meeting this livelihood, we do so many deeds. There is no account of the kind of bad deeds that are done to earn our livelihoods. It takes several lives to redeem those bad deeds that have been done in one life form. इसीलिए महाराज वाल्मीकि का उदाहरण दिया करते थे। वाल्मीकि पहले उनका नाम रत्नाकर था और वो जंगल में रहते थे। जो भी राही आते जाते थे उनको लूटते थे। Whoever would cross, he would be looted by this Nakar. वो इतने क्रूर होते हिंसा करके कि पहले उसको मारते थे। वो He would that person. He wouldn't even talk to that person. तो कहते इस तरह से कर्म बढ़ते गया बढ़ता और वो धन ले जाके अपने बाल बच्चा और माँ बाप की सेवा में लगाते थे। And whatever he looted, he would take that loot and take care of the livelihood of his wife and children and his parents. क्योंकि जंगल में ही रहते थे। वहां उन्होंने दो बनाई थी, एक अपने औरत बच्चे के लिए और एक माँ बाप के लिए। Where he stay, he had made two huts, one for his parents and one for his family. तो पाप इतना बढ़ गया कि वो उंगली Had made so many such a burden of karmas, large kind of a necklace, and he would wear that of all the fingers of the people he had looted ओला इतना हो गया to the bottom, to the floor. So he had uh, hurt so many people. तो नारद को आई ये पाप का कितना पाप करते जा रहा है, ना मालूम कितना जन्म इसको हिसाब नरकों में सड़ना पड़ेगा। God alone knows how many lives he will have to spend. तो एक दिन नारद तंबूरा और झोली लटका के वहां प्रकट हुए और वैसे ही रहे थे जब रत्न लूटता था। And this small bag and his instrument, he with his tambura, violin like sitar like instrument, he was walking the forest. देखा रत्नाकर सामने है तो नारद ने सोचा ये बोलता तो नहीं पहले मारता है, तो Beats well and then only he do them. He doesn't give an opportunity to talk. So he was feeling merciful. He decided that he'll have to do something by which he will not start like that. जैसे ही नारद सामने आए तो वो कहता है देखो, नहीं पहले तो बोलता नहीं था। नारद ने दया दृष्टि डाली उस पे तो उसके कुछ पाप कट गए। सदो दया दृष्टि से कुछ पाप कटे तब वो बोलता है कि देखो जो कुछ तुम रखा है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब दे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। So Narad, he showered some grace on Ratnakar. So instead of attacking him directly and further increasing his burden, Ratnakar, because of the grace of Narad, instead talked to him and he said that whatever you have, you give it to me or I will beat you. तो वो कहते हैं कि अच्छा भाई, जो कुछ मेरे पास है वो सब दे देता हूँ, लेकिन तू तो बता ये सब ले जाके तू क्या करता है। उन्होंने और थोड़ी दया दृष्टि डाली। So he showered little more grace and he told Ratnakar that, look, I'll give you everything I possess, but will you tell me what are you going to do with that? तो बोलता है क्यों, हमारे बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी देख रेख करता हूँ, उनकी सेवा में खर्च करता हूँ। तो नारद कहते हैं कि अच्छा तू करता तो है, क्या वो तेरे धन के ही लोग संबंध है कि तेरे पाप के भी कोई भागी बनेंगे? तो कहता है क्यों नहीं बनेंगे, वो खाते हैं तो बनेंगे।
नारद कहते नहीं, जो करता वही भरता है, जा पूछ क्या। So then, when he asked, Ratnakar told him that I will take this, I will take your possessions and use it for getting livelihood and feeding my family. So Narad asked him that uh, this, so you are going to give all this to your family. So is it only the food that they will enjoy from you, or is it also a share of your karmas that they are taking when they eat this food, which you are doing, getting for them by doing all these things? So he said, no, of course. Ratnakar said, no, they will be sharing in everything, my deeds also, and the food that we are sharing. So Narad told him that no, it is not that. The rule is that whoever is doing whatever deed is paying for it. Nobody else is sharing that. तब उसके अंदर थोड़ा ख्याल आया, नारद ठीक कर रहे हैं, पूछ के आना चाहिए। तो बाद में बोलता, अच्छा तो कहीं मैं उधर जाऊं तुम इधर भाग के जाओ तो नारद कहते, भाई तेरे को भरोसा नहीं तो बांध दे, पेड़ से बांध के जा। तो नारद को एक पेड़ से बांध देता है और फिर जाता है। तो पहले माँ बाप को बिठाता, झोपड़ी में जाता है, माँ बाप को बिठा के पूछता है कि पिताजी, मैं लूट के मार के कत्ल करके धन लूट के लेके आ रहा हूँ, वो धन से ही आपका संबंध है कि हमारे कर्म के भी आप भागी बनोगे? तो वो कहते हैं तू हमारा बेटा है और उम्र में पालन करना बेटे का धर्म है, अब तू कैसे लेके आ रहा है धन हमें मालूम नहीं, पाप के तो हम बागी नहीं बनेंगे, क्योंकि मालिक ही उनसे बुलवाया है, पाप के तो हम बागी नहीं बनेंगे। So he said that, so Narad said that, why don't you go and ask your family, check with them whether they are also willing to share your karmas. So Ratnakar said, okay, if I go there, then you will run away. So first I will tie you and then I will go. So Narad was tied to a tree, and then Ratnakar went first to his parents, and he told his parents that, look, I bring food for you, I bring all this, whatever I get, that is by looting people or killing them or hurting them. So I am incurring karmas by doing that. And when I bring this food to you, you are sharing the food also, and are you also sharing my karmas? So his parents said that, look, we are old now, and it is the duty of our son to take care of us in our old age. Now, how you earn that money and how you take care is really your problem. But so we will not be able to share in the karmas that you are doing. We have not asked you to do that. तो बाद में अपने औरत बाल बच्चे के झोपड़ी में जाता है, उन लोग को बिठा के पूछता है कि भाई बताओ, मैं तुम्हें खून करके लूट के लाके जो धन देता हूँ, वो धन से तुम्हें मतलब है कि हमारे पाप के भी कोई भागी बनोगे? So then he went to his wife and children, and there also he asked that, I'm getting you all this wealth by murdering people or killing them or hurting them. So are you only going to share the wealth with me, or are you also going to share my karmas? तो वो लोग भी वही जवाब दिए, तुम हमारे पति हो और ये बाल बच्चे हैं, पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम कैसे कमा के लाते हो हमें पता नहीं, हम पाप के तो भागी नहीं बनेंगे। So his wife and children also, they also said the same thing, that, look, we are your family, and you are responsible for taking care of your family. So how you do it is not something that we are concerned with. You have to take care of us. So we will not share in the karmas that you are incurring. तो इसको बड़ा झटका लगा, अरे कर रहा हूँ मैं इन लोग के लिए, और ये लोग कोई पाप के भागी, मैं अकेला, ना मालूम कितने जन्म नरक में हमें भोगना पड़ेगा। उसको जागृता ही आ गई और वहां से भागा भागा गया और नारद को पेड़ में बांध के रखा था, उसने रस्सी काट दिया और नारद के चरणों में गिर पड़ा।
So then it dawned upon him that he's incurring so many deeds, so many bad deeds he's doing, and all those only he has to suffer and pay for. Whereas the wealth and whatever he's getting as a result of doing those deeds, that is being shared by the family. So that is where that transformation came about, and he went running back to Narad, untied him, he cut the ropes and fell at his feet and begged for mercy. और फिर नारद कहता है, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये पता पहले होता तो मैं ऐसा कर्म नहीं करता था। मेरे पाप कितने हैं, कोई हिसाब नहीं। अब ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे आप पाप कट जाए। So he told Narad that please forgive, because I have done so many deeds in this ignorance. I was not aware of what I was doing and how it was going to affect me. So please show me a way of redeeming all of these bad deeds that I have done. तो नारद बोले, मालिक का नाम सुमरन के अलावा ये कर्म और पाप काटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कहता, मुझे उपदेश दे दो। तो जिस पेड़ से बांधा था उसी पेड़ के नीचे बिठा के नारद ने उनको उपदेश दिया। So Narad told him that other than doing the Simran of God Almighty, there is no way of reducing or redeeming these deeds. So you have to repeat the name of your God. So he asked for being given that initiation. तो So और उसका कुछ भ्रम दूर किया और उसको उधर ही बिठा दिया। और बाद में नारद वहां से चले गए, वो बैठा और उसको अंदर बहुत पश्चाताप था और मालिक के नाम सुमरन में इतना भूल गया कि करीब 10,000 बरस तक बैठा रहा। so sorry. हाँ। Narad made him sit in the near that same tree, and he gave him the initiation. And there he also explained uh, various things to him. And when Ratnakar, he understood all of that, and then he sat there for the repetition, and he felt he was so transformed that once he sat there for 10,000 years doing the repetition. क्योंकि ये सतयुग की बात है, सतयुग में 1,00,000 बरस की उम्र थी और 10,000 बरस तक बैठा रहा। तो नारद को बाद में ख्याल आया कि मैं उसको बिठा के आया था, वो है कि कहीं गया। So in Satyug, the life was 100,000 years of human beings. So he sat for 10,000 years, and after 10,000, at the end of 10,000 years, Narad felt, he remembered that I had given initiation to this person. So need to find out what has happened of that person. फिर उधर जाते हैं और जाके देखते हैं तो वहां पे दीमक का घर बना दिया था। वो इतना मस्त हो गया कि उसको चेतन चढ़ गया और प्रकाश हो गया, समाधि में मस्त हो, उसको अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं, दीमक ने अपना घर बना लिया। तो बाद में देखते हैं तो किधर नजर नहीं आता है। तो उसमें कान लगा के सुनते हैं तो इसके अंदर से आवाज आ रहा है, दीमक का जो घर था। तो उसको तोड़वा के देखते हैं तो ये वहां बैठा है, इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो बाद में नारद उठाया उसको, उठा के कहते हैं, भाई जो कुछ तेरे को अनुभव हुआ है उससे दूसरे को तो फायदा होने दे, तो तेरे साथ ऐसा ही गया तो क्या फायदा है। तो कहते, महाराज क्या करना। कहते तो रामायण लिख दे, राम के गुण। हाँ, राम के रामायण लिख दे। तो राम पैदा होने के 10,000 बरस पहले उसने रामचरितमानस लिखा, माने रामायण लिखा, असली रामायण। रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखा है, जो असली रामायण उसने लिखा था संस्कृत में, और तुलसीदास ने तो उसका ये किया है, हिंदी में है। So when Narad Narad felt that he should check on Ratnakar.
and he came back to the place. Now there he saw that he could not see Ratnakar, but there was a very big ant hill, and when he came closer, he could hear the repetition that was going on within. Now, for these 10,000 years, Valmiki had got so engrossed in his repetition that he had gone within, and there was light uh, coming out from his body, and he was sitting there inside that anthill. So ants had built a complete anthill on top of him. So then Narad got the anthill removed, and then he brought back Ratnakar from his meditation, and he said that now that you have done this and you have had all this experience and you've done this practice, you should give something back to humanity. And therefore, Valmiki, that is Ratnakar, wrote the epic of Ramayana. He wrote the story of Rama, which was 10,000 years before Rama would be taking birth. और जो कीड़े घर बनाते हैं ना, दीमक को बाल्मीक कहते हैं। तो उसके शरीर पे घर बना लिया ना, तब से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। The name Valmiki is derived from ant hill. So they that is how the name Ratnakar was changed to Valmiki, because that was the ant hill within which he was sitting and doing his meditation for 10,000 years. तो देखो, राम पैदा हुए क्या, यहाँ तक कि सीता को लेके गए, छोड़ के आए, वहां तक वो थे, और उन्होंने ही सीता का रक्षा किया था जंगल में। So he was alive till in the next yuga, when Ram was actually born after 10,000 years. वो त्रेता युग में पैदा हुए। हाँ वही, तो बाद में भी थे वो Yeah. वाल्मीकि। So Valmiki was there. He was alive when Ram was born, and when he was in exile, and when Sita was kidnapped. So he also helped Sita. So he was there till then. तो कहते हैं कि देखो, एक ऐसा हिंसक और क्रूर उस मालिक के नाम सुमरन से पवित्र और एक बड़ा महर्षि ऋषि बन गया, जिसका नाम आज दुनिया में रोशन है। So you can see that a person who was so cruel and who had such a burden of karmas, he also, by doing the meditation, by doing Simran, he also became a great rishi. That now his name is also immortalized. नाचार तन संग बसेरा तीर छूटे राम धनदारा सुत नाती कहियन ये नहीं आवे काम। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, धन दौलत, स्त्री पुत्र पौत्र और खेती गृहस्थी, जो भी जमीन जायदाद है, ये अंत समय हमारे काम आने वाले नहीं। So Swamiji Maharaj says that all your possessions, belongings, your house, your farmland, and your family, all of them will not be of any help at the time of your death. इसीलिए महात्मा कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, इनका हमारा संबंध 4 दिन का, जब तक हम शरीर में बैठे हैं तब तक संबंध है, जब शरीर को खाली करके चले जाते हैं संबंध खत्म हो जाता है। So all these possessions and all these relationships are only related to your body for but a few days, and when we leave this body behind, all those possessions and all those relationships will come to an end. और फिर अगर वही जीव कुत्ते के शरीर में गया तो आगे वैसे ही बाल बच्चे, वैसे ही संबंध वहां इकट्ठा हो जाते हैं, ये लोग वहां नहीं आते। And in the next life, if that jiva is born as a dog, then he will have a family as a dog. He will have others, and he will build relationships there. So this family will no longer be of any relevance, and these relationships will not continue into his next life. नहीं, खाली एक शरीर से इनका मतलब होता है
इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि इनका हमारा संबंध 4 दिन का है, ये कर्मों से है, शरीर से है, आत्मा से नहीं है। So these relationships, therefore, are only related to this body. And when this body ceases, those relationships will also cease. They will not continue. And therefore, they are only very temporary and for a limited period. धनदारा सुत नाती कहियन नहीं आवे काम श्वास दुधारा निकई जारी दिन खाली जाम तो फिर आप समझाते हैं श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम, क्योंकि 2 रूप से हमारा श्वास शरीर रूपी भंडार से खाली हो रहा है, अंदर बाहर। तो एक दिन में कितना श्वास जा रहा है? तो सोमनाथ महाराज ने भजन में लिखा है 600,021 चले दिन रात श्वासा, पल पल आयु नासा जिनका सुमार नहीं। 600,021 21,600 श्वास एक दिन में हमारे शरीर रूपी भंडार से बाहर जाते हैं। So Swamiji Maharaj is saying that this dual breath that we are taking, that we are breathing in and breathing out, that is also limited and that will also come to an end. Somnath Babaji in his Bani has written that every day we take 21,600 breaths. These are priceless breaths that are going away from our body every day. ये श्वास हमें गिनती से दिए गए हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार। अब जब ये श्वास खत्म होता है तो 1 सेकंड भी इसमें रहने नहीं देते। So these breaths have been given to us for these breaths are limited and our life is dependent on these limited number of breaths that have been given to us. As soon as that number is over, we cease to exist from that breath. एक दिन ये श्वास का भंडार खाली हो जाता है और हमारा ये शरीर खाली चमड़े जैसे, जिसको मशक कहते हैं, कहते मशक समान। मशक कहते थे पहले क्या थे, बिजली नहीं थी, मोटरें नहीं थे, तो चमड़े की एक थैली बनाते थे और उसको लटका के उसमें कितना 1 मटका पानी आता है, तो उस थैली पे दीवार पे चढ़ के ऊपर ऊपर से डालते थे दीवार भिगाने के लिए, उसको मशक कहते हैं। तो वो मशक में पानी रहे तो एक जानवर जैसा नजर आता है, अच्छा लगता है, लेकिन पानी जब खत्म हो जाता है तो भद्दा नजर आता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे ये शरीर जब तक श्वास है अच्छा है, और श्वास खत्म हो गया तो इसको भी 2 दिन नहीं रख सकते। So Swamiji Maharaj says that when these number of breaths they come to an end, when this breathing in and breathing out comes to an end, this same body which is so beautiful and we adorn it now, that will become like a corpse. And the word used is masak. Masak is like a leather bag. Earlier people used to use this leather bag and carry water in it. It would carry a few pails of water inside, and that bag would look quite beautiful when it had water, and it was used for watering houses or newly constructed walls. So when the water would get over, it would look quite ugly. So that is what he's uh, giving an example of, that it is this body which is looking beautiful now, but the moment the breath stops, it will become a corpse and it will no longer look beautiful. श्वास दुधारा निकई जारी एक दिन खाली चाम मस्त समान जाने देनी बहती आटो जाम आगे अचेत गापिल हो रहता मुनीन मूल कलाम फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं तू क्यों अचेत है, तेरे अंदर ओ कलाम ओ शब्द जो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है,
वो क्यों नहीं सुनता? He says that why uh, why are you uh, कलाम not listening? The holy sound current is coming at the eye center, and you are not listening to that holy sound current. वो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, वो आपको अंदर बुला रहा है। एक बार अगर वो आवाज सुन ले तो हमारे एक जन्म ने करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। So he says that you don't seem to be conscious of that holy sound current which is coming from God Almighty, and it is resonating at the eye center. And if you are able to manifest that holy sound current, then not only this life, but uh, hundreds of previous lives, you will be able to redeem your deeds of all of these lives. वो बहुत निर्मल है, पवित्र है, इसीलिए सब संतों ने उस नाम की महिमा गाई है। वो शब्द सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में टिका है। So it is a very pure uh, sound current which is resonating at the eye center, and it is coming from God Almighty and resonating at the eye center. तू अचेत गाफिल हो रहता, तूने न मूल कलाम, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, जो नहीं छोड़त काम। तो वही कहते हैं कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। कहते माया, एक तो पैदा होने के समय माया धोखा देती है, क्योंकि जब ये आत्मा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय इसको परमात्मा शब्द भी प्रकट करके रखते हैं, ज्योति भी, प्रकाश भी दिखाई देता है, और यही दो आधार से वो आत्मा माँ के गर्भ में रहती है। उसका परवरिश शब्द ही करता है और उसी के जरिए वो बड़ा होता है। So Swamiji Maharaj says that uh, you the you have been cast, a wheel has been cast upon you by Maya. Now, when there is a newborn in the womb of the mother, the nourishment is done by the light and sound, both of which are manifested by God Almighty. So, inside the newborn, the baby, before it comes out of the womb, is being nourished by God Almighty with the light and sound. As soon as it comes out, Maya casts its wheel. और वो वही सुनता है और ज्योति को, प्रकाश को देख के खुश रहता है आत्मा, और ये शरीर धीरे धीरे उसी से उसको आहार भी मिलता है शब्द से, और शब्द से ही शरीर बड़ा होता है। So inside that soul is listening to the sound current, and it is seeing the light within, and that is what is giving it nourishment, and that is how the body is getting built. तो बाद में जब 9 महीने पूरा हो जाता है, शरीर तैयार हो जाता है, और माँ के गर्भ से बाहर आने के समय माया क्या करती है कि वो भूल भरम का पर्दा डाल देती है। तो So, जो अंदर प्रकाश दिखता था, शब्द सुनाई देता था, वो बंद हो जाता है। so inside the baby is supported by these by the light and sound, and as soon as it is born, Maya casts a wheel of duality on that newborn, and because of that wheel, the baby stops seeing that light, and that jiva stops seeing that light and sound which it was seeing inside the womb. तो इसीलिए बाहर गिरने के बाद वो आत्मा रोता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। मेरा वो आवाज जो अंदर सुनाई देता था, वो लाइट जो दिखाई देता था, वो कहाँ चला गया। Therefore, the baby cries when it is born because it ceases to listen to that sound current. It feels where it has suddenly come and landed because it is no longer listening to that holy sound current, and it is not being able to see that light which it was seeing within. और शब्द प्रकाश दोनों आधार होने से
आत्मा को सैकड़ों जन्म की खबर हो जाती पिछला, उसको सब दिखाई देते रहता है अंदर में माँ के गर्भ में। वो सब देख देख के घबराता है, दुखी होता है और मालिक से प्रार्थना करता है, अरे मालिक मैं पीछे कितने कितने दुख भोग के आज मैं यहाँ आया, और ये भी काल माने ये भी जो है जेल ही माँ वो भी स्थान भी ऐसा ही है दुख का। तो बोलता है ये भी ऐसा ही है दुख का स्थान, तो हमें इस दुख से बाहर निकाल, तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है भूल भरम का माया पर्दा डाल देती है और ये भूल जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दूध पीता है, अन्न खाता है, भूल भरम बढ़ते जाता है और परमात्मा को जो जबान दे के आया था वो भूल गया। So inside, when that jiva is listening to the holy sound current and is connected to the sound current and is seeing the light, it is also seeing all its previous births, all its previous lives, what all karmas it has done, how it has suffered through all these karmas, and it can see everything. It can see all its previous lives, and where it is placed, that is inside the womb of the mother, that also is a very difficult place. It is a very dark place, and it is very difficult there also. So that baby then cries out to God Almighty that I've gone through so much, I've gone through all of these sufferings, I've done all these kind of deeds, and here also I am in this kind of enclosed place, and you please allow me, if I get free from this bondage which I am now placed in, then I will only pray, uh, I will only sing your praise, I will only do your devotion, and I will spend my time in your remembrance, because you please free me from this. But the moment the jiva comes out, the wheel of duality is cast up by Maya, and with that, it forgets that connection of that light and sound within, it forgets all of its previous births, and the new relationship starts setting in. So as it drinks the milk and as it starts looking at people around it, it starts associating and identifying with all of these things around here, and is overcome by Maya. तो कहते हैं इस तरह से छोटे बच्चे को 3 महीने के अंदर उसका ध्यान आते रहता है और बाद में पूरा भूल जाते हैं। 3 महीने के अंदर का बच्चा अगर कोई रोता है, आप थाली बजाओ तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो अंदर सुनता था, वो अभी नहीं। So for about 3 months or so, there are the new babies or newborns. They still are in touch, हाँ, and they still remember. And after about 3 months, they forget. So even when a newborn baby cries, we make some sound of a with a थाली spoon and plate, or we make some हाँ, noise. Then they pay attention to that. तो वही आप इशारा देते हैं कि माया यहाँ पे पैदा हो गया माया के देश में, और माया ने बुरी तरह से फंसा दिया। धन दौलत, मान बढ़ाई, कुटुंब परिवार, खेती गृहस्थी सब दे के इसको इसमें बांध दिया। So Swamiji Maharaj says that you have now come into this world of Maya, and then Maya has entangled you very badly in all of these possessions, your farmland, house, relationships, all of these things have badly entangled you. और इसको सच समझ के रात दिन उसी के रंग में रंग गया, और परमात्मा को जो अंदर जबान दे के आया था वो भूल गया। And as a result, you have forgotten God Almighty. You have forgotten that promise you have made to God Almighty when you were in the womb. And you have now associated yourself, and you are outwardly distracted by all of these things around you. इसीलिए महात्मा आकर के समझाते जाते हैं कि देखो, कौल करार करके आए हो मालिक से, और तुम मालिक को भूल गए, और मैं मेरा मेरे में पड़ गए। So therefore, Mahatmas awaken the soul, and they tell the soul that, see, you have forgotten what you have promised to God Almighty. You had promised that you will do His devotion when you are born, but you have forgotten all of that, and now you are stuck in this me and mine. इन गुरुदया छुपो नहीं
मन को राखो थाम। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई इस माया के जाल से, इस दुख से फिर निकलने का एक ही रास्ता है, बिन गुरु दया बचो नैया से। गुरु के कृपा के बगैर इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, इसीलिए भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने आपको सुमरन ध्यान दिया है, वो सुमरन ध्यान का रूप हो जाओ। So Swamiji Maharaj says that there is no way to get out of this entanglement. It is too overpowering. But you take the refuge of your master, and he has initiated you, and the Simran that he has given, you take respite in that. You do the Simran, and that will free you from this entanglement. क्योंकि वही एक ताकत है जो काल के जाल से निकाल के और दयाल के देश परमात्मा के पास ले जाके परमात्मा के गोद में बिठाएंगे। Because that is what your master and Naam, that will take you out of this world of Kal and take you back to the world of Dayal and place you in the lap of God Almighty. गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम। दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। तो वही आप इशारा देते हैं कि वो दयाल हैं, संत दयाल हैं, और तुम उनकी शरण में जाओगे, नाम सुमरन करोगे, तो दुनियादारी में भी सेकंड सेकंड में तुम्हारी संभाल करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। So he says that the master is gracious, he is Dayal. So when you go and you surrender to your master, you go and do his devotion, then he will at each step take care of you and he will extend his grace to you at each step. और अंत समय, मरने के समय, जहाँ काल हिसाब मांगता है, वहां जाने नहीं देंगे। आपको लेने के लिए गुरु आएंगे और दर्शन देके आपको ऊपर के मंडल में ले जाके रखेंगे, जहाँ आनंद ही आनंद है। And at the time of death, where you have to otherwise give an account to the Lord of Judgment, to Kal, there he will not let you do that, and instead he will come himself to fetch you, and he will place you at a place in the higher planes, which is where you will enjoy or you will be happy there. और वो अंदर में भजन सुमरन करा के गुरु हमेशा आपके यहाँ भी वहां भी साथ रहेंगे। मालिक के दरबार में ले जाके मालिक का दर्शन कराने तक वो हमारा पल्ला नहीं छोड़ते। And there you will be meditating upon him. He will be with you there also. He is here also with you, and he will hold your hand till he takes you back to God Almighty. हे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। तो कहते हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग विसावे। आज ये भोग, आगे ये रोग बनते हैं, हमें 84 में ले जाने का कारण बनते हैं। कहते इससे अपने दिल को हटाओ, नाम से जोड़ो, और इससे निकल करके अपने देश में जाके विश्राम करो। He says that whatever you are enjoying now with your senses, these enjoyments are later going to turn into your ailments. So he says that leave all this enjoyment and ailments and instead focus on the devotion to go back to your true home, go back to God Almighty. क्योंकि माया ने ये सब जाल बुन के रखा है आपको फंसाने के लिए। माया काल नहीं चाहते हैं कि कोई भी जीव हमारे कंपाउंड से निकल के जाने पावे, और वो हमें यही फंसा के रखना चाहते हैं। Because Maya and Kal, they do not want the soul to leave their realm, to leave their compound. So they will do everything to ensure that the
soul remains entangled here in this duality that they have created. इसीलिए गुरु जो भी सत्संग में समझाते हैं उसको मानो, उस पर अमल करो और अपने घर जाने की चिंता करो, यहाँ रहने की चिंता छोड़ दो। So, therefore, where the masters explain in the satsangs, you follow what they are saying in the satsangs, you accept what they are saying in the satsangs, and prepare to go within to God Almighty. Leave this want and feeling of going outwardly in this world, and leave the pleasures of this world to go within. छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। बार बार फिर वही कहते हैं कि भाई ये प्यारे, आत्मा को प्यारे प्यारे कहते हैं कि भाई अब तो गुरु का कहना मान, तो आगे तेरे को विश्राम मिल जाएगा, आना जाना खत्म हो जाएगा और आत्मा जाके परमात्मा के साथ आनंद में रहेगी, अमृत का पान करेगी। So, Swamiji Maharaj says that you will get peace and joy, and you will be able to rest with God Almighty. All this going back and forth, this life and death, all this journey will stop, and you will be at rest, at peace with God Almighty. तो इसीलिए कहते हैं गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। तो कहते हैं कि बस एक ही रास्ता है कि गुरु का हुक्म पालन करो, 2.5 घंटे रोज भजन सुमरन करो, इसी जन्म में सतलोक सचखंड चलो। So he says that therefore work towards getting that rest and peace with God Almighty, and stop this worrying here. Follow the instructions of the Master, what he is telling you, and do your devotion, do that meditation of 2.5 hours every day. And in this life itself, you will be able to go to Sachkhand. अगर आप दुनिया की कोई आशा अपने अंदर नहीं रखते हैं, किसी भी चीज से ज्यादा लगाव नहीं, प्रेम नहीं, आप खाली गुरु के चरणों से ही रखते हैं, तो कोई भी ताकत नहीं, चाहे आप भजन करें या ना करें, कोई भी ताकत नहीं जो आपको सीधा सतलोक जाने से रोक सके। If you have that true love and affection for God Almighty and your Sadguru, and you are not carried away by attractions here in this world, you don't have attachments here, even if you are not doing your bhajan simran, there is no power on in this creation that can stop you from going to Sachkhand. वो इसी जन्म में वो आत्मा आराम से सतलोक पहुंच जाएगी। So in this life itself, that soul will easily reach Satlok. गुरु का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। आगे राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। तो वही कहते हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, देगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कह सुनाई, खोज करो निज नाम। तो कहते भाई वही एक ताकत है जो आपको अचल मुकाम यानी परमात्मा के धाम में ले जाके वो स्थान आपको दिलाएंगे। इसीलिए उस नाम को अपने अंदर देखो, नाम आपको 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, जो सतलोक सचखंड से आ रहा है, वो सीधा लेके जाएगा। So he says that that Naam, which is resonating at the eye center, it is coming from God Almighty. And that Naam will be able to take you to a place of permanence. There you will be able to go back to the lap of God Almighty. तो इसीलिए कहते हैं कि भाई संत मत के अंदर खाली एक ही बात है, गुरु का हुक्म का पालन करना। अगर गुरु का हुक्म का पालन करेंगे तो गुरु ही कुल मालिक है, और सतपुरुष के घर पे सारा काम करने वाला वो गुरु ही है। तो कोई भी नहीं, उसकी मर्जी हो गई सीधा सतलोक।
गुरु खुश तो करता, कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु खुश है तो परमात्मा खुश है, वहां काल कर्म की किसी की एक नहीं चलती। In Santmat, the only thing that we have to do is listen to our masters, and whatever the masters are instructing us to do our meditation or do our meditation of 2.5 hours, we have to only fulfill that. The master is nothing but God Almighty. He is working as he is the person who works in Sachkhand, he is the person who's working with Satpurush. And if you please your master by following what he is trying to tell you, then there is no uh, power in the universe, so there is no power in creation that can stop you and go against his will of taking you back to Sachkhand. उन्होंने गुरु को सब पावर दिया है, तो किसी को भी लाएगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो गुरु किसी को भी ले जा सकता है, लेकिन उनके हुक्म का पालन करने वाला चाहिए। So God Almighty has given that power to the masters, that whoever they take and whichever soul they bring back to Sachkhand, he will accept that soul. So the masters have their will to take the soul. It is only about us getting their grace and following their instructions for them to do this. दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। राधा What? Yeah. Okay. We have the initiation program tomorrow morning. So 7 to 9 in the hall next to Babaji's, where Babaji gives darshan. The initiation program will be held in that place. So the rest uh, will come into this hall and sit for meditation. And at 9 o'clock, then they will disperse. Babaji will come and give darshan before sitting in the meditation. There will be no meditation talk, but he will give darshan and make everyone sit for meditation, and then he will go and attend the initiation program. Those who are taking initiation, just wait after the foreigners darshan today, and whatever instructions have to be given will be 9 बजे कोई भजन चालू at 9. When people disperse, don't sing any bhajan. Just disperse quietly at 9 p.m. 9 a.m. tomorrow. Also, when everyone is taking darshan in the adjacent hall, please try to maintain silence there. There is a lot of noise at the time of darshan.